लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल पार्ट है। अब देखिए जो प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न ही आपके सामने है वो ये है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स हियर, एज यू कैन सी इन द फिगर हियर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, O being the center of circle. If OE bisects, so what are we given here? We are given that OE bisect the angle DEA. So therefore, we can write angle OED is equal to angle OEA. So OE bisect the angle here DEA. तो angle OED is equal to angle OEA here. ये हो गया, आपको दिया हुआ है. Now we have to prove that. So to prove AB is equal to CD. That's what we have to prove here. So we have to prove that AB is equal to CD. ठीक है, अब देखिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन CD एंड ऑन AB. So let's say I call it as P and this is as Q. So draw perpendicular. So draw OP perpendicular to CD and OQ perpendicular to AB. So since I have drawn here, I am not going to write it here. तो हम लिखने नहीं जा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे आपके लिए फिगर में ड्रॉ कर दिया है. Now I will consider triangle OEP and OEQ. So consider triangles. Consider triangle OEP and triangle OEQ. ये दो ट्रायंगल आप यहां पे कंसीडर करें. ठीक है, नाउ सी व्हाट आर वी गिवन. OE इज कॉमन. ठीक है, तो अब जरा हम यहां पे लिखते हैं OE इज इक्वल टू OE. सो OE इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल एंड एंगल OPE is equal to angle OQE, which is 90 degree, as you can see in the figure. OPE, OQE both are right angle, and angle OEP is equal to angle OEQ. It's given because OE is the bisector of angle E. तो ये गिवन है. नाउ विच क्राइटेरिया कैन बी अप्लाई हियर, दो एंगल और एक साइड. सो बाय यूजिंग बाय एंगल साइड क्राइटेरिया we can claim that. So this imply we can say that triangle OEP is congruent to triangle OEQ. ये हो गया दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का तरीका. नाउ वंस यू डू इट, आई बिलीव अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब हुआ क्या. अब हम यहां से कह सकते हैं बाय CPCT. सो देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्टेटमेंट वी कैन क्लेम दैट OP इज इक्वल टू OQ. OP और OQ आपके बराबर आ गए. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रूव दैट OP इज इक्वल टू OQ हियर. नाउ व्हाट, Now can we claim that we have proved what we had to? हो गया सिद्ध? क्या भी नहीं हुआ? क्या लगता है? हो गया. कैसे? Now you just have to use that theorem which says, so therefore by converse of the theorem, क्या था? यदि दो कॉर्ड आपके सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, then they are of equal length. Since OP is equal to OQ and they are perpendicular to the respective chords CD and AB, so that means two chords AB and CD are at equal length, equal distance, they are at equal distance from the center of circle, that is OP and OQ. Hence, by the converse of statement, we can claim that chords are of equal length, so AB is equal to CD, hence proved. तो ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन और उसको प्रूव करने का तरीका. ठीक है, तो हमने थ्योरम्स का प्रयोग किया, हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया का प्रयोग किया एंड वी गॉट द रिजल्ट हियर. तो चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. देखिए अब यहां पे आपको गिवन है दैट द कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो यहां पे थोड़ा सा रिवर्स स्टेटमेंट गिवन है. सो व्हाट आर वी गिवन हियर,
So we are given here that cos, so like given AB is equal to AC here, ये given है, and moreover we are given OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to AC. तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ M है और यहाँ पे N है, मान लिया आपने. लेट्स से दिस. Now what do we have to prove? We have to prove that PB is equal to QC. So to prove, so what we have to prove? PB is equal to QC. चलिए अब प्रारंभ करते हैं फिर से. तो चल जो पहले प्रूव करना उसे ज्वाइन कर लेते हैं भाई. PB QC फिजिकली तो यहां दिख नहीं रहे. तो अब लुक एट दिस फिगर नाउ. Aren't PB and QC are two chords of the circle? Of course they are. PB is a chord, QC is a chord. Now if we have to prove that two chords are of equal length, आपके पास दो converse statement हैं. Either the angle subtended by those two chords at the center get equal, then the chords are equal, or the distance of the chords from the center get equal, then chords are equal. अब यहां पे जो मोस्ट लाइकली और मोस्ट प्रोबेबल हमें दिख रहा है वो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर दिख रहा है. एक हो गया POB और एक हो गया आपका QOC. So if we can prove, so if I will write here, if angle POB get equal to angle QOC, then we can use our theorem to claim PB is equal to QC. तो अब ultimately my focus is on proving this thing. अब हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें पता है by using reverse theorem in that case, converse of the theorem in that case, we can easily claim that PB and QC are equal. So now I am going to fix my focus on this thing. So let's try it. अब आ जाते हैं. देखिए POB is same angle as MOB and QOC is same angle as NOC. ठीक है. सो आई विल आस्क यू पीपल टू कंसीडर दिस एंड दिस ट्रायंगल. अब ये दो ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं. चलिए. सो कंसीडर ट्रायंगल MOB and triangle NOC, I suppose. NOC, MOB, right. Angle M is equal to angle N. How much? 90 degree. We know that's given in the figure. ठीक है. So angle M is equal to angle N which is 90 degree. तो ये आपको यहां पे दिया हुआ है. What else? OB is equal to OC, radii. So OB is equal to OC. Both are radius of the circle. So radii of the circle. Radii. एंड what else? अब देखिए अभी तक हम लोगों ने इस गिवन स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं किया. ये यूज हो गया बट ये नहीं यूज हुआ. AB is equal to AC since OM is perpendicular to AB and perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisect the chord. So MB is, so here we can say BM is half AB and AB is equal to AC. So this is equal to half AC. Fine. And AC, half AC is nothing but how much? CN. So that's your CN. So therefore BM is equal to CN. Now which criteria? So BM is equal to CN. Angle this is 90. ठीक है. तो ये 90 हो गया आपके इक्वल. Opposite side to 90 degree, that means hypotenuse OB is OC equal और एक side. So therefore आपका अब आप कह सकते हैं. So therefore by RHS criteria, right angle hypotenuse side criteria, you can claim that these two triangles are congruent. So triangle MOB is congruent to triangle NOC. These two triangles are congruent in that case. And once we do it, so therefore by CPCT, once we get it, now we can claim by CPCT whatever we had to. So by CPCT, angle MOB is equal to angle NOC. Look in the figure. Angle MOB ही हमारा angle POB है और angle NOC ही हमारा angle QOC है. So therefore angle POB
is equal to angle QOC, and by converse of theorem here, so therefore by converse of theorem we can claim, since two chords are subtending equal angle at the center of the circle, so therefore we can claim that the chords are of equal length. PB is equal to QC and hence proved. So PB is equal to QC, hence proved. तो ये हो गया आपका. So that was a good question here. थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन. अभी तक जो हम लोग करते हैं वो they were quite simple in comparison to this one. ठीक है, तो ये थोड़ा सा उससे बेहतर प्रश्न था. So that was our second example. Now let's look at the next one.